Hello, my name is Padar. Today I am going to share with you about lesson 3, part 2. Already I have given you the part 1. तो मैं आज आपको पार्ट 2 के बारे में समझाऊंगा. इस पार्ट 2 का सबसे बढ़िया टॉपिक है सेंटेंस टाइप्स एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन अबाउट इट. सो सेंटेंस क्या है? If you search on Google, the Google says about it a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation, or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. तो इसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे एंड आई विल सिंप्लीफाई इट. तो यहाँ पे देखिए, in grammar, a sentence is the basic grammatical unit. It has a group of words and expresses a complete thought in sense. A sentence takes a subject and a predicate. तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप with one example. Here is one sentence: he plays chess every day. So here he represents subject, और सब्जेक्ट के बाद जितना वर्ड्स रह गया दैट इज योर प्रेडिकेट. सो ग्रामर में सेंटेंस एक बेसिक ग्रामेटिकल यूनिट में होता है. उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना स्ट्रीमलाइन है और उसका अपना सजेशंस एंड आइडियाज़ है. एक वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आप यूज़ करेंगे. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका थॉट्स क्लियर होना चाहिए, सेंस क्लियर होना चाहिए, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. So now let me give you more idea about it. So what is correct sentence? हमें कैसा पता चलेगा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा, it is understood that a sentence should be grammatically correct. The subject and verb must both be singular or plural. In other words, the subject and verb must agree with one another in their tenses. If the subject is in plural form, the verb should also be in plural form. यानी सेंटेंस में हम ये समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस भी हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों यदि वो सिंगुलर है या फ्लूरल है वो देखेंगे. सब्जेक्ट यदि फ्लूरल है तो फ्लूरल वर्ब लगेगा. सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना पड़ेगा. तो इसी हिसाब से बेसिक रूल्स आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा. इन दैट वे इफ़ यू कैन कम टू नो कि आपका इंग्लिश सेंटेंस करेक्ट है. सो नाउ I want you to also pay attention about it. What are the basic grammar in English? English में basic grammar क्या है? तो basic grammar के लिए I would like to pay and I want you to draw or I want you to pay your attention here. मैं चाहता हूँ कि आपका attention यहाँ पे दें. There are many grammar rules in English, but the basic refers to sentence structures. बहुत सारे rules तो English में हैं लेकिन basic जो है sentence structures में है. और वो सीखने के लिए आपको क्या सीखना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं. ये सारे चीज़ का यदि आप अच्छे से स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आप एक बेसिक ग्रामर आप इजीली कैच कर जाएंगे एंड योर इंग्लिश विल बी वेरी नाइस. सो इन पार्ट 1 एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. सो हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट अगेन कि हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, ध्यान देना होगा. सो देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वन इज कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस, अनदर वन इज क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड अनदर वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये 4 मेन टाइप्स हैं. बट रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस 2 more टाइप्स एंड मोस्ट ऑफ grammarian they have already suggested in their grammar book, that is your optative and emphatic. So now to know more details about it you can watch part 1 where I have given all details. So sentence structure में और क्या हम ध्यान में रखेंगे. So sentence बनाने के लिए आपको जो सबसे important स्टडी करना होगा वो है सिंपल सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड और एक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. ये 4 सेंटेंस के ऊपर यू हैव टू पे अटेंशन एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन. और ये आपको रिटन और स्पोकन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा. नाउ आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन मोर अबाउट सेंटेंस टाइप्स. वन वे टू कैटेगराइज सेंटेंसेस इज बाय द क्लॉजेस दे कंटेन. तो जो जो क्लॉजेस वहाँ पे हैं उसी के हिसाब से सेंटेंस को हम समझेंगे. तो कैसा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
जो सिंपल सेंटेंस है कंटेन्स अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक ही सेंटेंस में यूज होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हिसाब से। आई लाइक एनिमल्स, दे आर माई कंट्री पीपल। कंपाउंड जो है कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वहां पे होगा जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसा कि आपका बट और एंड सो होगा। आई लाइक डॉग्स एंड माई ब्रदर डजंट लाइक डोंकीज। we write on paper but we can use computer, so दो sentence को when we join it that would become compound. So now I want you to also pay attention about complex. Complex कैसा होगा, contains an independent clause plus one or more independent clauses वहां पे रहेगा। a dependent clause starts with a subordinating conjunction, that, because, while, although, there, if, इस तरह का आपका कंजंक्शन यूज होगा। जैसा कि शी लव्स पपी दैट फॉन्डल्स एट हर व्हेन शी गोज नियर। ही कंप्लीटेड माई होमवर्क while his mother cooked lunch. सो जब जब हम कंपाउंड वे में लिखेंगे कि दो तीन सेंटेंस को एक साथ जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इट कंटेन्स थ्री और मोर क्लॉजेस of which at least two are independent and one is dependent. जैसा कि you don't like cats but your sister doesn't like dogs because they bark. And you can paint on wall but using a board is better as you can easily correct your lines. तो ये है compound और complex का mixture. So now I want you to also know about something details so you can have a clear idea about English sentences. There are a few things of writing sentences in English which need to be discussed. It is a new way of understanding English grammar. और भी कुछ sentence type हैं, techniques हैं जो कि English grammar को आपको और भी अच्छे से समझने के लिए help करेगा. So now what are they? वो होता है run on sentences. ये एक new concept है, is going to help you better to understand it. So there are two sentences that is not separated with an and punctuation mark and not joined with a conjunction. जैसा कि he went to Bharat in the vacation. It is the most beautiful place he has ever visited. यहाँ पे देखिए कोई पंक्चुएशन हमने यूज नहीं किया और सीधा एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस ज्वाइन करके पूरा फुल कंप्लीट एक सेंस दे रहे हैं। ये होता है रॉन रन सेंटेंसेस। ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स राइटिंग में हम लोग वी राइट कॉन्टिन्यूसली। नेक्स्ट वन, it is never too late to learn to English grammar. You never know when you may get benefits. If you are shopping this evening, can you buy me some eggs? I want to make egg curry. So now ये है run on sentence। एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस आप ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ये एक टाइप ऑफ इंग्लिश राइटिंग है जो कि नाउ डेज वी आर फॉलोइंग इट। Another one, sentence fragments. Sentence fragments क्या है? Fragment sentences are not finished sentences. ये पूरा finished नहीं है. It does not contain a complete idea. जैसा कि एक common fragment sentence in writing and speaking is a dependent clause standing alone without an independent clause. I don't think India is going to lose the match. Somebody expressed this idea. तो उसका hidden meaning ये है और उसके अंदर वो और कुछ बोलना चाहता था बिकॉज इट डिड नॉट चूज टू बैट फर्स्ट बट ही डिड नॉट एक्सप्रेस इट। द बॉय गॉट एंग्री एंड शाउटेड एट हर। क्यों? द रीजन वॉज नॉट क्लियर, सो इट डिड नॉट मेंशन इट। सो पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ वन सेंटेंस विथ पार्ट ऑफ वन मैसेज ओनली, which was not a very good choice. She watched YouTube for an hour and then went to bedroom आफ्टर फॉलिंग asleep ऑन द सोफा। ये क्लियर नहीं कहा गया और सिंपल ये स्टेटमेंट दिया गया। सो ये था एक फ्रेगमेंट सेंटेंस। नाउ रैम्बलिंग सेंटेंसेस, ये क्या है? इट इज ए सेंटेंस मेड ऑफ मेनी क्लॉजेस ऑफन कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज और एंड, ये सब लग के ये सारी चीज बनते हैं। एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन अबाउट दिस पार्ट विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट वन part of examples. So Pranshu usually wakes up before 6 o'clock, but yesterday his alarm clock did not ring, so he got up late when his boss called him at 11 a.m. to ask whether he reached or told him that he would lose his job if he was late.
So this is called rambling sentences. Now, as already I have given you idea about sentences, so remember one thing, when you write and speak correct, it is always appreciated. And one more idea, never forget, learn to use many sentences or sentence structures and use them in your daily practice for better improvement in English. Whether you are writing or speaking, if you come across with a different kind of sentence structures, you can have English language proficiency level. So thank you so much being with me today, and thank you for watching. This is my WhatsApp number, and you can call us also in this number, and our website is mainstayabroad.com. You can visit it, and if you're looking for online classes, please add on WhatsApp and connect us, and we can really give you the best session. So I wish you all the best. Have a good luck.